Quand je suis allée là-bas, sur la terrasse balcon, la différence entre ma perception ou la perception de la conscience et celle que j'avais avant, quand j'ai toujours dit, je reste là, j'appelle le Seigneur, et dans sa présence, je reste. Et c'est seulement quand ils sortirent que je rentre. C'était comme ça. Et j'avais une certaine relation avec les gens, les choses, le monde extérieur. Extérieur, pas extérieur, mais pas le monde. Hier, avant-hier, quand je suis allée, je pensais à rien, je n'observais même pas. Simplement, je suis allée. Je ne voulais pas savoir ce qui se passait, ça ne m'intéressait pas, et je n'observais pas. C'était comme si l'autre expérience avait été des siècles avant. C'était tellement autre chose. Et si spontané. La terre était petite. Et pourtant c'était tout à fait ici. C'était le corps qui sentait comme ça. Et en même temps, tu vois, j'étais 2 étages au-dessus des gens. Chaque fois que je regardais, je reconnaissais des tas de gens comme ça qui jouaient. Une vision si claire, beaucoup plus claire. La vision que j'avais était toujours un peu trouble, parce que ce n'était pas tout à fait physique ce que je voyais, n'est-ce pas? C'était les forces qui se bougeaient. Et hier, c'est comme si c'était monté au-dessus de la possibilité du brouillard. C'était beaucoup moins physique, beaucoup plus exact. Et avant, j'avais l'impression de la force, de la conscience, de la puissance concentrée à un certain endroit et se répandant. Et là, c'était une immensité de puissance, de lumière, de conscience, de perception, qui se concentrait dans un tout petit coin. C'était tout simple. C'est une différence si colossale que je ne m'y attendais pas. Je n'y pensais pas, je ne m'y attendais pas.
fallu que ce soit, je suis restée là tout le temps que c'était comme ça, puis alors à un moment donné, elle dit ça suffit. Les gens se fatiguent. C'était pas moi. C'est assez. Ils ne peuvent plus à supporter davantage. C'est ça qui m'a fait rentrer. Ça a duré 5 minutes. En 5 minutes, ils étaient pleins à craquer. Ça, alors, je crois que ce corps est devenu une autre personne. C'est plus la même chose. Il n'est plus ce qu'il était. Et pourtant, si le souvenir n'est-ce pas, de son existence terrestre n'a pas disparu, ce n'est pas que ce n'est pas un autre corps. Et pourtant, c'est une autre personne. शाश्वतम् अकारणम् अकारणानां शिवम् केवलं भासकम् भासकानां तुरीयमतमः पारमाद्यन्तहीनं प्रपद्ये परमं पावनमद्वैतहीनं नमस्ते नमस्ते विभो विश्वमूर्ते नमस्ते नमस्ते चिदानन्दमूर्ते नमस्ते नमस्ते तपोयोगगम्य नमस्ते नमस्ते श्रुतिज्ञानगम्य कनकोत्तमकान्तिः सा सुकान्तिकनकाम्बरा देवी कनकवर्णाभा कनकोत्तमभूषणा कमलाङ्कुशपाशाब्जैरलङ्कृतचतुर्भुजा मीरा श्रीमीरा रुक्माम्बुजासना इमां यः पूजयेत् भक्त्या स व्याप्नोति चराचरं भूत्वा भोगान् यथा कामः देवी सायुज्यमाप्नुयात् मीरा शरणं मम मीरा
ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना एतत् सर्वम् ॐ ब्रह्मार्पणमस्तु ॐ ब्रह्मार्पणमस्तु ॐ नीलाम्बुजगलाभिरामनयनां गौराङ्गीं शरदिन्दुसुन्दरमुखीं विस्मेरां बिम्बाधरां कारुण्यामृतवर्षिणीं हरिहरब्रह्मादिवीरवन्दितां ध्यायेत् सर्वजनेप्सितार्थफलदां वन्दे मीरां जगत्प्रसूं वन्दे मीरां जगत्प्रसूं मीरा नामैव मम जीवनम् मीरा नामैव मम जीवनम् मीरा ममैव शरणं मीरा ममैव शरणं मीरा मम शरणं मीरा मम शरणम् नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मीर्नमोऽस्तुते नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयङ्करे सर्वपापहरे देवी महालक्ष्मीर्नमोऽस्तुते स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्ते महोदये महापापहरे देवी महालक्ष्मीर्नमोऽस्तुते पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्मस्वरूपिणी परमेशी जगन्माता महालक्ष्मीर्नमोऽस्तुते सर्वदुःखहरे देवी महालक्ष्मीर्नमोऽस्तुते जगत्स्थिते जगन्माता महामीरा नमोऽस्तुते सर्वसिद्धिप्रदायिनी महामीरा नमोऽस्तुते मीरा शरणं मम मीरा शरणं मम ॐ श्री मीरा शरणं मम मीरा शरणं मम ॐ प्रणतानां प्रसीद त्वां
At the head she stands of birth and toil and fate. In their slow rounds the cycles turn to her call. Alone her hands can change time's dragon base. Hers is the mystery the night conceals, the spirit's alchemist energy is hers. She is the golden bridge, the wonderful fire, the luminous heart of the unknown is she, a power of silence in the depths of God.